What's up, YouTube? It's our Rhonda from Gangland Gamers, and today we'll be reviewing Valorant patch notes 0.50. This came out like 3-4 hours pehle, and we are going to review it. A lot of people face problems understanding what the patch actually means. ज़्यादा लोग को नहीं होती, थोड़े बहुत होती है, but we'll be running down these patch notes, किसका buff हुआ, किसका nerf हुआ, and how this will impact the gameplay. मैं एक्चुअली इस गेम प्ले का इस पैच नोट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ बिकॉज इन दिस लास्ट वीक लेट्स ऑल फेस इट, इतने बग्स, इतना स्प्लिट का एफपीएस ड्रॉप्स, आई मेड अ वीडियो ऑन दिस एज वेल. बहुत सारे मेजर इश्यूज आ रखे थे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू दिस. सो आई एम नॉट गोना रीड आउट एवरी सिंगल वर्ड इसमें, आई एम नॉट गोना बोर यू विद दैट, बट मेजर पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम लोग साथ साथ क्या क्या आ रहा है इसके अंदर. सो लेट्स बिगिन, शैल वी? Coming at you faster than iron, yeah, whatever. So the first thing I can read is all rifles have been updated to make single tap and burst fire more efficient. So जैसा CSGO वगैरह में होता था, a lot of people rely on single and burst fire जिनका long range weapons के लिए, long range fights के लिए, because spray down हमेशा useful नहीं होता. This is tied to gun recovery time, which we'll touch on more in the notes below. So अगर तुम लोग को नहीं पता कि gun recovery time क्या होता है, मोस्टली लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं बता देता हूँ उसको क्या होता है. सो व्हेन यू शूट अ वेपन, तुम्हारा क्रॉस हेयर हिल जाता है, राइट? सो द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ए क्रॉस हेयर वापस बीच में आने के लिए. तुम शूट करते हो, तुम्हारा क्रॉस हेयर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जहाँ पर भी जाता है, फिर जितना टाइम उसको वापस मिड में आने में लगता है वापस, तो ये तुम्हारा गन रिकवरी टाइम हो गया. और उनका मतलब यही है कि वो सिंगल टैप और बर्स्ट फायर को इस चीज़ में अच्छा कर दें कि उसका रिकवरी टाइम अगर कम हो जाएगा तो तुम उतना जल्दी जल्दी सिंगल टैप शूट कर सकते हो. Let's carry on. We have Sage, Cypher, Omen, Viper, Brimstone, Phoenix have all undergone changes. So आगे जाके I think ये explain करेंगे कि इनको nerfs मिले हैं या buffs मिले हैं या फिर क्या मिले हैं. So we'll find that out. The cost of some agent abilities have been turned to better reflect their impact on the game. अच्छा, so they have also increased or decreased the price of abilities. कुछ abilities हमें खरीदनी पड़ती है in the beginning of the round by phase के अंदर. अब वो या तो उनका प्राइस बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा, डिपेंड करता है कि nerf है buff है. So let's begin with the actual game patch notes. Gameplay and balance, weapon updates. You will no longer enter the walking accuracy state when transitioning from run to stop. We noticed many players were entering a walking accuracy state during their run to stop transition that made it appear as if shots they fired landed were done at full speed. कई बार लगता था लोगों को, यार तुम कितनी बार देखा होगा कि सामने से बंदा भाग रहा है एंड ही टुक अ शॉट और वो लैंड करता था, तुम बोलते थे कि भाई ये बंदा भागते भागते मुझे शॉट कैसे मार रहा है, राइट? तो वो चीज़ इन्होंने अभी थोड़ी नर्फ करी है कि जैसे ही बंदा स्टॉप कर रहा होता था तो एक बंदा वॉक कर रहा होता था. अब जैसे बंदा रन करते करते फिर स्टॉप करता है ना, वो बंदा थोड़े टाइम के लिए फिर भी वॉकिंग कर रहा होता है. तो उन्होंने उसको डेथ स्टॉप बनाने का ट्राई किया है, और उस डेथ स्टॉप के अंदर नाउ दैट यू कांट गेन वॉक एक्यूरेसी व्हाइल ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ रन टू अ स्टॉप, वी हैव स्लाइटली इंक्रीज द साइज ऑफ द डेथ जोन फुल एक्यूरेसी स्टेट टू मेक इट बिट इजियर टू गेट एन एक्यूरेट शॉट क्विकली. तो वो वॉकिंग स्टेज में जो बुलेट्स थी वो काफ़ी एक्यूरेट थी. तो अब उन्होंने क्या किया, उसको डेथ स्टॉप करने का ट्राई किया है, और जो डेथ स्टॉप पे जो एक्यूरेसी उसको बढ़ा दिया है. ऑल राइफल्स रिकवरी टाइम्स ऑन ऑल राइफल्स हैव बीन अपडेटेड व्हिच शुड मेक टैप एंड बर्स्ट फायरिंग मोर एफिशिएंट. Inaccuracies accrued any time to weapon is refired prior to a complete duration of a weapon's respective gun recovery time. Base walk increased 0.6 से 0.8 कर दिया इन लोगों ने. We felt like walk spraying with rifles was a little more effective than we'd like, particularly at longer ranges. We're going to pull back on this accuracy slightly and continue to monitor. ये चीज़ जो मैं भी तुम्हारे से बात कर रहा था, चलते चलते जो शॉट्स मार रहे हैं, वॉकिंग शॉट्स जो पड़ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे थे, तो उन्होंने उसको कम कर दिया है उसको, स्पेशली एट लॉन्ग रेंजेस. और वो फिर बोल रहे हैं कि वो फ्यूचर में देखते कैसा उसका वो होता है. Vandal, horizontal recoil reduced by 15% while crouched and stationary. Vandal required a buff, और उन्होंने ये buff दिया है Vandal में अभी. I personally use Vandal because of the one shot headshot thing, जो longer range पे Phantom से नहीं होता है, and मैं Vandal ही prefer करता हूँ. So it's a good thing at least for me because मेरे को Vandal पसंद है, and any buff to Vandal is a positive for me. This was intended to be the case and now properly matches the crouch benefits of other rifles. Also crouching and shooting was a big thing in Counter Strike, right? अब और इस गेम में लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे क्या, वॉकिंग एंड स्प्रे. वी फेल लाइक वॉकिंग स्प्रे, है ना? तो अब इन्होंने इस चीज़ को हटाने के लिए अब ज़्यादा क्राउड शूटिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है. गन रिकवरी टाइम 4 सेकंड से 3.75 सेकंड्स.
So this is better for your taps and this is better for your bursts. Tap efficiency 4 to 6. So this is really nice. This is a really nice buff to Vandal. Phantom. Fix an issue where the gun recovery time was higher than intended. Okay, so there was an issue जिसमें ज़्यादा seconds लग रहे थे I guess gun recovery time 0.55 seconds to 0.35 seconds. That's also a huge buff. Tap efficiency is 3 to 4. So Vandal got a much bigger tap efficiency. So tapping with Vandal is obviously much better than tapping with Phantom. So this is just for spraying and this is for tapping I guess. Depends on your playstyle. Bulldog automatic fire. Fix an issue where the gun recovery time was higher than intended. Same issue was with Phantom. Gun recovery time 0.5 seconds to 35 seconds, which is as much as a Phantom. So nothing major to Phantom and Bulldog. Just उनका gun recovery time कम कर दिया है. और tap efficiency Phantom में. Bulldog में also I think they could have increased the time tap efficiency maybe. Guardian. Fix an issue where the Guardian. Okay, so all these guns had this issue. Gun recovery time 4 seconds to. I don't think Guardian required this. Guardian is already very OP in its current state. I wouldn't say it's OP, but it's a one-shot headshot and tapping with this weapon is it's a quite accurate weapon, right? And low pingers वगैरह इन सबको काफी advantage ही मिलता है जब तुम इनके against हुए. So I don't think Guardian required a buff, but ठीक है. Moving on, I guess. Machine guns are significantly underperforming. Okay, so let's see what they have for machine guns. Price reduced from 1700 to 1600. I guess what they mean in this is machine guns ज़्यादा लोग ले नहीं रहे थे और उनका main purpose होता है rapid fire करने का, shoot lots and lots of bullets while also increasing the power of the Ares relative to weapons at a similar price point. So price reduced from 17 to 1600 creds. Firing error. This value is a curve. Blah 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 blah. So talking about Ares, price reduced from 1700 to 1600 creds. Firing error. This value is a curve that has immediate value between each bullet. Bullet 2 has slightly less error than bullet 1 and so on. So what they mean is they have buffed the machine guns. इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी next bullet होगी उसकी accuracy तुम्हारे previous bullet से ज़्यादा होगी. So bullet 1 will have more accuracy. So bullet 2 will have more accuracy than your bullet 1. Has slightly less error than bullet 1. Right. Bullet 5 का भी वही चीज़ है, उनका error कम कर दिया. Bullet 10 का भी error कम कर दिया. Reduce the amount and intensity of horizontal recoil after the first 8 bullets. So 8 bullets के बाद it gets more stable. Odin reduce the amount of intensity of same. Odin के साथ भी ये चीज़ की गई है. But I think this is just for Ares. Yup. This thing has not been applied to Odin. Agent updates. Okay, now to the big updates. Now to what we all have been waiting for. Because इससे काफ़ी लोग के main agents change होंगे काफ़ी ज़्यादा. So let's see कुछ ज़्यादा major ना हो और bugs fix हो गए हो. Sage slow up zone duration decreased from 9 seconds to 7 seconds. I feel 9 seconds was a lot of time. और जबकि दिए भी 2 orbs आते हैं तो फिर I think 14 seconds of slow is more than enough. I don't think you require 18 seconds. Slowing amount decreased from 65% to 50%. It was literally impossible to walk on that. तुम चल ही नहीं पाते थे orbs के ऊपर. So I think this is a good update, at least the first 2 points. We all know Sage is OP. We have decided to try to reduce some of her stopping power while still allowing her to fulfill her role as the premier staller in Valorant. These changes aim to reduce the overall efficacy of her slow orb, especially if they are chained back to back. Alright. Cypher. Cyber cage no longer slows enemy that move through it. So जब भी Cypher अपना cage डालता था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लोड और बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक टक करके एकदम से वो होता था वो वाला पार्ट. सो वो चीज़ स्लो कर दिया. अब साइफर प्लेयर्स को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक दिस जस्ट बैलेंसेस द गेम ओवरऑल. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड अपडेट. साइफर एंड सेज डेफिनेटली needed enough. We have always envisioned Cypher as a premier sentinel gathering info on his enemies and picking them off, but the slow on the cage was allowing him to move into Sage's territory by stalling an entire enemy team. We still think that this will be a tool he uses to buy some time, but enemies will now have more options when pushing his defenses, especially when coordinated. Spy cam cooldown when destroyed increased from 30 to 45 seconds. For good Cypher players, this will not be a problem because what good Cypher players
टेंड टू डू इज वो अपना पहला कैमरा लगाते हैं, फिर डजंट वर्क आउट दे जस्ट टेक इट ऑफ। काफ़ी लोगों का कैमरा बर्स्ट हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। बट गुड साइफर प्लेयर्स ऐसी जगह पे कैमरा प्लेस करते हैं कि दे आर एबल टू टेक इट बैक। एंड यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि इफ़ यू टेक द कैमरा बैक, कैमरा अगर तुमने बिना ब्रेक हुए ले लिया वापस, सो द कूल डाउन इज 15 seconds। तो अगर तुमने उससे पहले ले लिया तो it's I guess it's fine. Spy cams have been flying into enemy territories like Sova dance at the start of rounds because the punishment for losing one to an enemy is so slow. Hopefully this change pushes you to find a safe hiding place for your nation camera. तो स्टार्टिंग में इसका मतलब है कि साइफर्स क्या करते थे, जैसे अगर तुम स्पिट पे खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेसिक पोजीशन पे कैमरा लगा देते थे साइफर, जस्ट टू गेट द इंटेल, और एकदम स्टार्टिंग में लगा के कैमरा छोड़ देते थे, फिर कैमरा टूट जाता था, किसी को फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि 30 सेकंड्स में नया कैमरा आ रहा था। अब दे आर नॉट फोर्सिंग, दे आर एनकरेजिंग साइफर प्लेयर्स कि अपना वो कैमरा ऐसी और ज़्यादा हिडन जगह पे लगाएं टू फाइंड न्यू प्लेसेस, ताकि उनका कैमरा ब्रेक ना हो, क्योंकि इफ़ द कैमरा गेट्स ब्रोकन उसका पनिश ज़्यादा है। ओमन dark cover smoke duration increased from 12 to 15 seconds. I don't think this was required. Omen buff was definitely required, but I don't know by how much this buffs Omen by. Like 15 seconds is a lot. 15 seconds is a lot of smoke time. I think 12 seconds was enough. I don't think his dark cover was the problem. Dark cover smoke projectile speed increased. This is a good point. His smoke projectile needed to be increased, so this is fine. I'm still not sure about the 15 seconds. I think 12 seconds was fine. उसका काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता था. 15 seconds wasn't required. Dark cover cooldown increased from 30 to 35 seconds. Alright, so that's fair. अगर 15 seconds कर भी रहे हो तो time भी increase करो, so I think that's fair. Especially at high tier play, we have seen Brimstone become the dominant controller, and we wanted to give his peers a boost to make them more viable while hopefully maintaining their unique playstyles. हाँ वही, अगर काफ़ी लोग ओमन की जगह फिर अगर सिर्फ स्मोक ही करना है तो ब्रिमस्टोन लेने लग गए थे, तो उसको बस थोड़ा ओमन को बेटर बनाने के लिए कंपेयर टू ब्रिमस्टोन दे हैव बफ्ड हिम. वाइपर snake bite radius increased 350 to 450. We are increasing snake bite radius to match the area denial abilities. So Viper also has been buffed. Alright, so there's just a buff to Viper. Brimstone, Phoenix and Viper. We see you bee hoppers out there jumping through Incendiary, Fireball and Snake Bite while taking no damage. We don't want to completely negate this skill, but we also don't want it to trivialize a whole set of character abilities. Height required to jump, overall damaging area denial abilities 80 to 120. Okay, so height required, damn. Snake Bite, Fireball and tick speed increased, total damage per second unchanged. So the tick speed has been increased. Oof, that's again a buff to Brimstone in my opinion. So Brimstone has once again been buffed. Phoenix also needed a buff. I don't think Brimstone needed a buff, but alright, we'll take it. I'm a Brimstone player, so I don't mind. I don't think Viper needed a buff either. Phoenix definitely required a buff. I don't think Phoenix's Molotov is as useful as others. Agent ability credit cost tuning. We felt the credit cost of some abilities did not match the impact those abilities brought to a match, and made adjustments for a more accurate reflection. Sage Barrier Orb increased from 300 to 400. Guys, they have already nerfed Sage's orbs. Alright, I'm not a Sage player, so I don't mind it, but just to keep the game balanced, I think 400 creds is a lot for just the orbs. Sage has to get 2 orbs for herself, and just spending 800 creds on this. So a normal player without any abilities needs around, if going for Vandal or Phantom, 3900, 1000 for the armor, 2900 for the weapon. Now Sage players will require 4700 just to get the armor, the weapon and just 2 orbs. और उसके बाद wall वगैरह सब कुछ. I think this is a lot. They shouldn't have done this. I think 300 was fine. 400 is a bit too much since they have already nerfed the Sage Barrier Orb, the seconds wala cheese uska, and the slow. Raise Blast Pack increased from 100 to 200 creds. Raise ka it's fine. Raise ka actually it needed a nerf. Phoenix Curveball increased from 100 to 200 creds.
Brimstone's insanity increased from 200 to 300 credits. Alright, this is what I was talking about कि Brimstone required enough. It didn't require enough, मतलब इससे बस उसको buff मिल रहा था जो required नहीं थी क्योंकि Brimstone already, I wouldn't say OP, but a must hero. Jet's updraft reduced from 200 to 100 credits. Yes, it was really difficult to use Jet. काफ़ी players को time लगता है Jet सीखने में, and updraft, I think it's fine. Nothing too important. जेट काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं और जो लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्ली सोलो कर रहे होते हैं इसलिए सो दिस doesn't really change anything. Agent armor carried over from prior rounds is no longer destroyed when new armor is purchased, allowing you to sell newly purchased armor and return to your previous armor status instead of having no armor. Okay, I guess this is a bug. This is not a bug, but I think this was required क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों के पास 45 आर्मर बचा होता है प्रीवियस राउंड का एंड दे जस्ट बाय द आर्मर रियलाइजिंग कि उन्होंने बस 1000 क्रेडिट स्पेंड कर दिए सिर्फ 5 आर्मर के लिए. सो आई थिंक दिस इज फाइन. मैक्स क्रेडिट कैप, टोटल क्रेडिट कैप इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12,000 टू 9,000. ऑलराइट. इसमें आई डू नॉट लाइक दिस. ये अगेन इज अ पर्सनल चॉइस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिलाई ऑन कम बैक. ठीक है, कम बैक पोटेंशियल. सो इससे क्या होता है तो जो विनिंग टीम है उनका लीड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. इट गिव्स द लूजिंग टीम अ चांस फॉर अ कम बैक. लोगों की बैंक इतना नहीं बढ़ेगा इनका और उससे जो सेकेंड टीम होगी वो उनकी इकोनॉमी ब्रेक कर सकती है एंड दे कैन ईजिली कम बैक. आई वुडंट से ईजिली बट 3,000 इज अ लॉट ऑफ गैप. 3,000 1 से 2 राउंड कम कर देता है उनके गैप का. इकोनॉमी उनकी ब्रेक होना बहुत आसान हो जाता है. I don't think this was required 12,000 to 9,000 because getting one operator is 4,500 with armor is 5,500 and just getting some is probably around 5,500 to 6,000 getting the abilities. So अगर किसी राउंड में ऑपरेटर बाय कर ली उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी. Like he would probably wouldn't be able to buy operators 2 to 3 rounds in a row अगर वो जीत रहे होंगे तब भी. So I don't think this was required. 12,000 was already, I wouldn't say it was already too low. 12,000 was fine, but let's see how this plays out. But this does increase the comeback potential, so comeback will be possible, and I think we'll be seeing a lot more close games than before. We're noticing that teams who manage to bank a high amount of credits are maintaining a rich economic state for too long, and becomes a monumental challenge for the opposing team to dethrone their economy. ऐसा है, but then again वही ना कि losing side को just comeback potential देने के लिए they have done this 9,000 के लिए. CSGO में हमारे पास 16,000 होती थी and the weapon cost was practically the same. 2,900 for your M4A, 130, 100 for, so it was practically the same, but abilities वगैरह I think again for me personally 12,000 was better than 9,000. 12,000 is better than 9,000, but we'll see how this turns out because कभी हम भी विनिंग साइड में होंगे, हमें पता लगेगा कितनी जल्दी इकोनॉमी ब्रेक हो रही है. So we shall find it out. So character updates, they just have Sova. I think they just have a Sova character update. I don't think it's anything of significance. Map updates are some bug fixes, added fixes for ciphers, spycam exploits to all 3 maps. There were a lot of cipher. I hope they also fixed Omen or Sage का जो out of the map हो जा रहे थे. There are some HUD and UI changes, and they have also fixed some bugs and थोड़ा barriers की changes है. But I think this is not of that much importance right now. Main जो updates जो buff और nerfs थे, those were this. Hopefully this video helped you out, helped out the people that weren't able to understand the patch, और अगर patch understand हो भी रहा था, so maybe they were able to understand the pros and cons of this patch. क्या buffs हैं, क्या nerfs हैं, तुम्हें अपना agent change करना है कि नहीं करना. So I hope this video was helpful for you guys. Thank you for watching. Thank you for liking. Comment if you want me to make a patch note review video like this every time a new patch comes out. Thank you for watching, boys. I'll see you guys next time.